Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all are all right. Allah bless you and your families. So today we are going to start our lesson number 46. It's about unit number 5 to 8 reviews. यानी review है ये chapter number 5 से 8 तक का. Clear? Look at the questions of chapter number 5 to 8. What do the daffodils represent in the poem? Poem आपने पढ़ी हुई है daffodils. ठीक है, तो इसमें डैफोडिल्स के जो फूल आते हैं, नरगिस के फूल किस चीज़ की अक्कासी करते हैं? खुशी की और रिलैक्सेशन की. क्लियर? हाउ हैज द पोएट हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज. उसने फिगरेटिव लैंग्वेज शायर ने जो इस्तेमाल की है, जिसमें मेटाफर, इस्तारे और सिमिलीज इस्तेमाल की जाती हैं, उससे वो क्या नज़म की तासुर को उजागर किया उसने? क्लियर? क्या उजागर किया? तो देखिए, ये फिगरेटिव लैंग्वेज जब भी इस्तेमाल होती है तो अच्छी मंजर निगारी होती है. तो आपने ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, उसमें से देखिएगा, उसके मुताबिक इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. और फिगरेटिव लैंग्वेज आपने उसमें पॉइंट के अंदर देखिए कैसे उसने यूज़ किया है. 10,000 a glance और इस तरह के लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए हैं. What was the कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन? कायद का हमारी कौम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था? आपने वो कायद विजन पढ़ा, उसमें कौम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, कितना कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर, क्या हमें वो समझते थे. हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन? कैसे हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं? आप अपने जर्नल व्यू भी दे सकते हैं इस हवाले से. हाँ, व्हाट डज लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फ्रॉम अस? हमारे मुल्क की जो मोहब्बत है वो हमसे क्या डिमांड करती है? बीइंग अ पैट्रियोट, हमें कैसा होना चाहिए वतन के लिए, क्या करना चाहिए अपने वतन के लिए? ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उसमें से देखें पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स निकाला करते थे हम लोग, उनमें से आंसर बनाइएगा. हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक? सुल्तान अहमद मस्जिद आपने पढ़ा, उसमें कैसा उसका अंदरूनी खाना किस तरह की सजावट हुई हुई थी, क्या क्या लगा हुआ था वहाँ पे? वाई वॉज सेपरेट रॉयल रूम अटैच टू द मस्जिद? मस्जिद के साथ एक सेपरेट रूम अटैच था, वो चूँकि स्पेशल रॉयल शाही कमरा था, बादशाह के लिए मखसूस है, तो ऑब्वियसली वो बादशाह की इबादत के लिए था, बादशाह वहाँ पे इबादत करता था. वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर? स्नो इवनिंग में आपने देखा कि घोड़ा जो है वो अपने आका को आगे चलने का क्यों कर रहा है? वो बेताब है कि मेरा मालिक आगे चला जाए, क्योंकि वो फिक्रमंद है कि यहाँ पे रुकना तो बेहतर नहीं है, क्योंकि कोई फार्म हाउस करीब नहीं और मुंजमद शाम है, बर्फानी शाम है. Clear? So see all these questions and recall the chapter in your mind and then I'll make answer. Okay? Look at the paraphrase the following lines. इनको आप easy English में कैसे convert कर सकते हो? Whose woods these are? I think I know. ये किसके जंगल है? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ. His house in the village though, अगर उसका घर देहात में है, गाँव में है, he will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा. To watch his woods fill up with snow, कि मैं उसका जंगल देख रहा हूँ कैसा कि वो बर्फ से ढंप रहा है, ढांपा जा रहा है. सो वो मालिक तो नहीं देख रहा, लेकिन मैं रुका हूँ यहाँ पे. सो ये फर्स्ट स्टैंजा था जिसको हमने ट्रांसलेशन देखी थी. आप उसको इजी इंग्लिश पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यू मस्ट कन्वर्ट इट इनटू इजी इंग्लिश. ओके, विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी आपने देखा होगा, कैसे रेफरेंस बनाते हैं, कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं. Look at this, choose the correct option. Branches of the tree were covered with blanket of snow. Clear? In this sentence we find an example of dash. Alliteration है, personification है, simile है या metaphor है? Definitely it's a metaphor. Keep up your morale. Wealth को keep up करें, section को करें, fortitude को या voice को? Obviously it's fortitude, जुर्रत, हौसला, हिम्मत. The floors are covered with carpet. The underline word covered, ये इसका एंटोनिम क्या होगा? covered ढांप देने को कहते हैं. spread, stretched, exposed करना, enclosed करना. तो definitely exposed करना. The little birds are piping yet. Piping, twittering. Clear? Choose the correct option. The police dispersed the crowd. क्राउड वर्ड जो है ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? डेफिनेटली इज कलेक्टिव नाउन. द डॉग सैट डैश हिज मास्टर, कौन सी प्रपोजिशन सूट करती है? बिसाइड, अलोंग, अक्रॉस या ओवर? बिसाइड. वेट डैश आई रिटर्न, बिफोर, अनलेस, इफ या टिल. टिल इज सूटेबल. आई हर्ड द नॉइज फ्रॉम द रूम.
came, come, coming, will come, coming from the room. He spoke very loud, very loud कौन सी है, मैनर है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, टाइम है, इट्स डिग्री. क्लियर. We watched him go. फर्स्ट फॉर्म है डेफिनेटली टू, हम सेंटेंस में काट देते हैं तो ये इन्फिनेटिव है. पास्ट पार्टिसिपल जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल इन्फिनेटिव है. He is fond of cooking. अब ing noun as a verb भी जो काम दे रहा होता है, verb as a noun काम दे रहा होता है. अंडरलाइन वर्ड इज एन, ये जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, या इन्फिनेटिव जेरेंड. क्लियर. इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, हैड का जब एक वो है ना कंडीशनल सेंटेंसेस, तो हैड जहां आ जाता है वहां पे फिर क्या होता है, आगे वुड हैव का यूज आएगा. ये थर्ड कंडीशन है ना. The shoe is pressing on my toe. On my toe, अब pressing और on my toe, तो कौन सा फ्रेज बना, प्रपोजिशन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है. Which of the following is an appropriate sentence? We are tired usually by the end of the day. We are tired by usually the end of the day. We are usually tired by the end of the day. We are tired by the end of the day usually. Definitely it's third one. We are usually tired by the end of the day. So आप लोगों को इसको गौर से देखना है. ये ग्रामेटिक वर्ब जो है वो आपको MCQs में आते हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं. So बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.